बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वाइला आदिन, और आद की तरफ अखाहुम, उनके भाई हूदा को भेजा। और आद की तरफ हमने उनके भाई हूद को भेजा। काला, तो फरमाया, या कौमी, ए मेरी कौम, आबुदू, इबादत करो अल्लाह ताला की। कहा, ए मेरी कौम, इबादत करो अल्लाह ताला की। माँ नहीं लाकुम, तुम्हारे लिए, मिन इलाहिन, कोई मबूद, गैरुहु, उसके अलावा। अल्लाह ताला की इबादत करो, नहीं है तुम्हारा कोई मबूद उसके सिवा। इन अंतुम, अगर तुम, इल्ला, मगर हो तो, मुफ्तारून, मगर इफ्तरा परवाज हो, यानी कि आप फजूल बातें करते हो उसके अल्लाह ताला के सिवा, और तुम्हारा कोई खुदा नहीं है। या ए कौमी, कौम मी के नीचे मेरी, ए मेरी कौम, ला अस्अलुकुम, ला नहीं, अस्अलु, साला, सवाल करता, कुम तुमसे, अलैहि, इस चीज़ पर, अजरा, किसी अजर का। ए मेरी कौम, नहीं मांगता मैं तुमसे इस तबलीग पर कोई उजरत। इन अजरिया, इन अगर अजरिया के अजर जो है, इल्ला, मगर है तो, अल्लाजी, उसी के ज़िम्मे है, फ़तरानी, जिसने मुझे पैदा फरमाया। मेरी उजरत मगर उस ज़ात पाक के ज़िम्मे है जिसने मुझे पैदा फरमाया। आ क्या, फापस, ला नहीं, ताकिलुम, क्या तुम अकल नहीं रखते, क्या तुम हकीकत को समझते नहीं। वह या कौमी, वाह, और या ए कौम, कौम मेरी, ए मेरी कौम, अस्तगफिरू, इस्तगफार करो, मग़फ़िरत तलब करो, रब्बाकुम, रब्बाकुम, अपने रब से। ए मेरी कौम, मग़फ़िरत तलब करो अपने रब से। सुम्मा, फिर, तूबू, तौबा करो, इलैही, उसी की तरफ, और उसी की तरफ तवज्जो हो जाओ। युरसिली, उतारेगा, अस्समा, आसमान से, वह उतार देगा आपके लिए आसमान से, अलैकुम, तुम पर, मिदरारन, मूसलाधार बारिश, व यज़िदकुम, और बढ़ा देगा, यज़िद, ज़्यादा कर देगा, कुम, तुम्हें, कुव्वतन, कुव्वत में, इला, तरफ, कुव्वातिकुम, और तुम्हारी पहली कुव्वत से। अल्लाह ताला फरमा रहे हैं कि रुजू करो उसकी तरफ, वो उतार देगा आसमान से तुम पर मूसलाधार बारिश, और बढ़ा देगा तुम्हें कुव्वत में, तुम्हारी पहली कुव्वत से। वाला ततवल्लु, और ना मुंह मोड़ो, अल्लाह ताला से, मुजरिमीन, जुर्म करते हुए। कालू, तो उन्होंने कहा, या हूदू, है हूद, माँ नहीं, जितना, नहीं ले आया तो हमारे पास, बिबय्यिनातन, कोई वाज़िह दलील। उन्होंने कहा, ए हूद, नहीं ले आया तो हमारे पास कोई वाज़िह दलील या कोई निशानी। वमा, और नहीं, नहनु, हम, बितारिकी, और नहीं है हम छोड़ने वाले, आलिहातिना, अपने इलाह को, अपने खुदाओं को, अन कौलिका, तुम्हारी बात से। वमा, और नहीं, नाहनु, हम, लका, तुम्हारे लिए भी, मोमिनीन, ईमान लाने वाले। उन्होंने कहा, ए हूद, नहीं ले आया तो हमारे पास कोई वाज़िह दलील, और नहीं है हम छोड़ने वाले अपने खुदाओं को तुम्हारे कहने से, और नहीं है हम तुम पर ईमान लाने वाले। इन्ना कूलू, इन, अगर ना हम, कूलू, कहें, अगर हम कहेंगे, इल्ला तरका, के मुब्तला कर दिया है, का, तुझे, बादुन, किसी, आलिहातिना, हमारे किसी खुदा ने, बिसु, तुम्हें, बुराई में, यानी कि दिमागी खलल में। हम तो यही कहेंगे कि मुब्तला कर दिया है तुझे हमारे किसी खुदा ने दिमागी खलल में। काला, हूद ने कहा, इन्नी, बेशक मैं, उशहिदू, गवाह बनाता हूँ, अल्लाह ताला को, वशहदू, और तुम भी गवाह रहो, अन्नी, बेशक मैं, बरी ज़िम्मा हूँ, बेजार हूँ, मिम्मा, उन चीज़ों से, जिसको तुम शरीक ठहराते हो, उन बुतों को। हूद ने कहा, मैं गवाह बनाता हूँ अल्लाह ताला को, और तुम भी गवाह रहना कि मैं बेजार हूँ इन बुतों से जिन्हें तुम शरीक ठहराते हो। मिन दून ही, इसके अलावा, फाकी दूनी, बस साजिश कर लो, कोई फरेब कर लो, नीगा छोटा, मेरे खिलाफ, जमीयन, तुम सब के सब, सुम्मा, फिर, ला तुनज़िरून, फिर मुझे मोहलत भी ना दो, इसके सिवा, बस साजिश कर लो मेरे खिलाफ, सब मिलकर, फिर मुझे मोहलत ना दो। हज़रत हूद अलैहिस्सलाम की कौम का नाम आद था। हज़रत हूद अलैहिस्सलाम की कौम का नाम
عاد تھا جو اپنے کسی دادا کے نام سے موسوم ہوئی تھی، اس کا وطن حجر موت اور یمن کا علاقہ تھا۔ حضرت ہود اس آیت میں اللہ تعالیٰ کی توحید کا سبق دیتے ہیں اور جھوٹے خداؤں سے قطع تعلق کی تلقین فرماتے ہیں۔ اس کے علاوہ اور کوئی نہیں، یہ مٹی پتھر کے بت بھی کبھی خدا بن سکتے ہیں؟ یہ تمہاری من گڑت باتیں ہیں جو ہرگز توجہ کے لائق نہیں۔ اپنی صداقت کی دلیل پیش کی کہ نہ تو میں تم سے کچھ مانگتا ہوں اور نہ تم سے کسی اجر کی تمنا کرتا ہوں، تو پھر مجھے جھوٹ بولنے کی کیا ضرورت ہے؟ ان اجری سے فرمایا کہ آخر میں تم سے مانگوں تو کیوں مانگوں، جبکہ میرا پیدا کرنے والا موجود ہے جو میری ساری ضروریات کا ذمہ دار ہے، وہ غنی بھی ہے اور کریم بھی، اسے چھوڑ کر میں تمہارے سامنے کیوں ہاتھ پھیلاؤں؟ تم گزشتہ گناہوں کی مغفرت طلب کرو گے اور آئندہ کے لیے اپنی عبادت و اطاعت اور توجہ کا قبلہ اللہ تعالیٰ کی ذات کو بنا لو گے، تو عقبہ کی سرخروئی کے ساتھ ساتھ تمہیں اس دنیا میں خوشحال کر دیا جائے گا۔ بارشیں برسیں گی، ہر طرف سرسبز کھیت لہلانے لگیں گے، معاشی خوشحالی کا ایک زرعی دور شروع ہو جائے گا۔ جب تمہاری مالی حالت سدھر گئی تو اولاد بھی صحت مند، خوبرو اور بکثرت پیدا ہوگی۔ دولت کی فراوانی اور قبیلہ کی افراد کی کثرت سے تمہاری قوت میں بے پناہ اضافہ ہو جائے گا۔ اہل کفر کا یہ رویہ ہمیشہ معاندانہ اور متعصبانہ ہوتا تھا۔ صاف کہہ دیا کہ آپ نے ہمارے سامنے کوئی ایسی دلیل پیش نہیں کی جس سے ہمیں آپ کی صداقت کا یقین آ جائے۔ ہم نہ اپنے خداؤں کو چھوڑیں گے اور نہ آپ کی دعوت قبول کریں گے۔ خواہ مخواہ آپ اپنا دماغ کھپا رہے ہیں اور ہمارا بھی وقت ضائع کر رہے ہیں اور اپنا بھی۔